40 minutes. And Pawas Jain sir has been the Chartered Accountant and co-founder, CFO at Blue Box Media Private Limited, Editor-in-Chief the Digital Network, Chartered Accountant B Coastline Company, Chief Marketing Officer, CMO, the Tech Portal, Director and Founder, Blue Box Media Private Limited, Financial Consultant at Paperwork Consulting Limited Private Limited, Founder and Chief Editor and Spring Tide Magazine. Sir, please. Hi everybody. So, first of all, that was a very elaborate introduction. A lot of things have changed since I updated my LinkedIn profile last. But okay, so first of all, obviously, I have been told by Ashutosh that last day exam day you must be really in a hurry of going back home and celebrating Diwali. But okay, of course, startups don't get holidays, so it's okay that you're sitting here listening to this. It might come of help somewhere or the other in your life. So I won't waste time introducing myself, it has already been done. I would talk about my entrepreneurial journey and about the idea and the concept of raising funds. But before we start, I want to know, Tamin told me that a lot of people here already have ideas. तो कितने लोगों के पास आइडिया है कुछ करने का? बहुत लोगों के पास. तो that is really great. तो कोई भी दो तीन जने मुझे बता सकते हैं वो आइडिया अभी तक, जैसा दिलनवाज ने कहा कि MVP में क्यों नहीं कन्वर्ट हुआ, प्रोटोटाइप क्यों नहीं बना अभी तक? Anybody can tell me the reason? Why is it not executed as yet? क्यों execute नहीं? आइडिया तो है ना, उसके आगे क्या करना है? फंड नहीं होता. एग्जीक्यूशन नहीं पता, आइडिया है. Right. So that is the point. The execution नहीं पता and funding नहीं है. These are the obvious two reasons why an idea does not convert into a startup. So basically, when we started, now Blue Box Media is a digital media company. We have online portals, and one of our portals is now India's leading global tech coverage and startup funding platform. So we post news, we post first-hand news, and we are bringing westernized style of reporting to India for the first time. तो अगर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को जानना है कि स्टार्टअप वर्ल्ड में क्या हो रहा है, या आपको अपने टेक ग्लोबल टेक में क्या हो रहा है जानना है, तो यू कैन विजिट आवर प्लेटफॉर्म thetekportal.in, which is one of India's most popular platforms now. But when we started 1.5 years back, तो हमारी भी ऐसी सिचुएशन थी that we did not know कि अब अगला स्टेप क्या है, कि ठीक है. Although a lot of people question, a lot of people used to say कि डिजिटल मीडिया में इंडिया में कोई स्कोप नहीं है, लोग पेपर पढ़ते हैं, you are 15 years ahead of India. लोग कहते थे कि इसमें फंडिंग नहीं है, लोग कहते थे कि आइडिया वर्क नहीं करेगा, क्यों पत्रकारिता कर रहे हो, उसलिए जैसा प्रोफेशन छोड़ दिया, और ये सब चीजें आती रहती हैं. तो but now 1.5 years later we have been funded 2 rounds by investors, angel investors, and we are now launching new products, a video platform. We are doing a lot of new things. We have built up a team. We are almost a 30 people company now, including the interns. So it has come a long way since then, and it has a long way to go. So ideas keep changing, ideas keep refining even after 5 years of working on a startup. And funding, secondly, needs to keep coming, क्योंकि कोई भी आइडिया एक रेवेन्यू रिच हो ना हो, that is not important. हो सकता है रेवेन्यू मॉडल है, but वो 2 साल बाद स्टार्ट होगा. For that point of time, you need funding, and you need regular funding to hire people for marketing, for a lot of other reasons. So basically, explaining the idea behind funding this, I am going to focus on that. कि फंडिंग का मेन फंडा क्या है और हमें यहाँ से आगे कैसे प्रोसीड करना है, और आपके बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रोसेस में आंसर होंगे. तो आई ट्राई टू कीप इट इंटरैक्टिव एंड आई विल बी वेरी क्विक, जिससे कि आप लोग भी जल्दी फ्री और घर जा सको. सो आई विल कम टू द पॉइंट. व्हाट इज सीड फंड, एंजल इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट. सो स्टार्टिंग विद द वेरी बेसिक, सीड फंड्स. So as the name suggests, seed होता है जब एक आइडिया, when idea is a seed, you need to raise seed funds. Seed funds is one of the most riskiest option of funding for an investor. एक investor के point of view से सोचा जाए तो seed fund तब raise किया जाता है जब बहुत सारा risk, तो बहुत सारा risk होता है, there is a lot of risk involved. एक आइडिया होता है, उसका कोई प्रोटोटाइप हो ना हो जरूरी नहीं है, हो सकता है एक इन्वेस्टर सिर्फ एक आइडिया में इन्वेस्ट करे because he sees a lot of potential. उस पॉइंट ऑफ टाइम पे you need to raise seed funds, जो कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की सिचुएशन है. So as it says, it involves a higher risk rather than normal venture capital funding.
because you never know, ideas fail more often. 85% of ideas in India are failing right now. So we are not Silicon Valley, and a lot of ideas don't work in the Indian context. Then angel investor. After the round of seed funds come angel investment. Again, as the name suggests, angel investor is an angel for the startup. At a time जब आपको सीड फंडिंग भी मिल गई है, जब आपका प्रोटोटाइप भी शायद रेडी है, उस टाइम पे एंजल इन्वेस्टर आता है एंड दे आर यूजुअली हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स. ये कोई बहुत ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं होता एंजल इन्वेस्टिंग का. दे आर जस्ट रिच इंडिविजुअल्स हु नीड टू इन्वेस्ट इन न्यू बिजनेसेस इन रिटर्न ऑफ इक्विटी. तो उस टाइम एंजल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेट आती है टू डेवलप योर प्रोडक्ट फर्दर एंड टू गो इनटू द मार्केट एंड वैलिडेट योर प्रोडक्ट इन द मार्केट वंस यू हैव द प्रोटोटाइप. बट again the point comes, is your startup ready for funding? How do you know that? आपको क्या पता कि आपका आइडिया जो स्टेज पे है, जैसे यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूजन है करना क्या है, तो क्या ये स्टेज सही है फंडिंग के लिए? Are you ready to raise funds? Let us see a few questions that if you ask yourself your startup, you can get the answers and you will know if you are ready to raise funds. First of all, is it a good market opportunity? Is your product ready for the market? क्या आपके प्रोडक्ट के लिए sufficient market है? सबसे बड़ी गलती जो एक स्टार्टअप करता है इज सेइंग कि माय कस्टमर, लाइक लेट्स से माय कस्टमर इज द यूथ ऑफ इंडिया, क्योंकि मैं डिजिटल मीडिया बना रहा हूं तो मेरे लिए हर यंगस्टर मेरा कस्टमर है. दैट इज स्टुपिडिटी. ऐसा कभी नहीं होता. यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक व्हेन यू कम टू योर कस्टमर बेस. तो अगर मेरा कस्टमर वो यंगस्टर है जिसको टेक या स्टार्टअप्स में इंटरेस्ट है, जो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है, दैट मेक्स मोर सेंस रादर देन सेइंग कि ये मेरा कस्टमर है. तो यू हैव टू सी वेदर यू हैव अ गुड मार्केट अपॉर्चुनिटी और नॉट. Is there a revenue potential? Of course, as very well known, VC या investor या किसी भी investor का पहला question होता है revenue model क्या है. Revenue model होना बहुत जरूरी है. चाहे 2 साल बाद स्टार्ट हो, 3 साल बाद स्टार्ट हो, लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कि आपका revenue model क्या है. You need to have revenue. You have to calculate कि आपकी spending अगर कहीं जा रही है तो क्या उसका revenue, उससे revenue आप generate कर सकते हो in return. You can do some competitive analysis at this point. और आप ये देख सकते हो कि आपके कॉम्पिटिटर्स अगर रेवेन्यू कमा रहे तो उन्होंने वहां तक पहुंचने के लिए कितना पैसा खर्च किया है, उन्होंने वहां तक पहुंचने के लिए क्या किया है, व्हाट इज देयर ट्रैक्शन, उनका व्यूअरशिप कितना है, उनका यूजर बेस कितना है, और उस पॉइंट पे जाकर उन्होंने रेवेन्यू अर्न करना स्टार्ट किया है. तो क्या आपके बिजनेस आइडिया में रेवेन्यू पोटेंशियल है या नहीं? लार्ज स्केल ग्रोथ, ठीक है, आपका आइडिया भी अच्छा है, आपका रेवेन्यू भी आ रहा है, पर क्या उस पॉइंट से आप अगली ग्रोथ स्केल कर सकते हो? कैन यू एक्सपैंड? अगर क्विकर है, क्विकर सिर्फ बाय एंड यूज ओल्ड सेल ओल्ड प्रोडक्ट्स में नहीं है, इट इज क्विकर कार्स, क्विकर जॉब्स, क्विकर रियल एस्टेट. क्या आपके प्रोडक्ट में ऐसी पॉसिबिलिटी है कि उसके वर्टिकल्स क्रिएट किए जा सकते हैं? या इज देयर अ स्कोप ऑफ लार्ज स्केल ग्रोथ? क्या आपको लीगल, एचआर, अकाउंटिंग सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकता है आपका स्टार्टअप आइडिया? क्या आपके पास ग्रोथ का स्कोप है? इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट एन इन्वेस्टर डू से. Is it a good time for the idea? Like I said, जब हमने स्टार्ट किया था तो लोग ये बोलते थे कि आपका आइडिया इंडिया के 15 साल ahead है. You are not ready. Your market is not ready for digital media right now. So is it a good time for an idea? और ideas fail होते हैं just because it is not the right time. एक आइडिया बहुत अच्छा हो सकता है, but maybe this is not the right time for that idea. शायद 5 साल बाद उस आइडिया की वैल्यू या उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी मार्केट में. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है कि whether it is a good time for your idea or not. Do you have the right team in place? So one of the most important questions to ask yourself when you are trying to raise funds is कि क्या आपकी टीम sufficiently अच्छी है for the kind of work that you are doing? क्या आपके पास एक टेक का बंदा है? क्या आपके पास एक फाइनेंस का बंदा है? Do you have somebody who knows the market? Do you have somebody who has a PR? So here comes the most important point जो दिलनवाज ने भी डिस्कस किया, to find a perfect co-founder, to find a perfect team. So basically, I would say that when you start finding a co-founder, it's better to, co-founders have to be so involved in the idea, so much into the idea that, they have the common vision, they have a common platform, they are thinking on exactly the same lines. So a co-founder, you can say a co-founder can be like tequila. So if life throws lemons at you, you can at least party, right? So partying is very important. So एक co-founder होना बहुत जरूरी है. So another thing in a good team, I would say, since we experienced it recently, you should have a girl on the team. So I have we recently we were joined by Himanshu sitting right here. तो जब एक girl आती है टीम में, जब एक woman perspective आता है टीम में, it grows a lot. Of course, there is a lot of lip gloss and big boss in the office.
But that's because if you are getting so much talent and so much ideas, so it's okay if it's word fit, and you should always have a female perspective on your team in your idea. चाहे idea कुछ भी हो, tech हो, social हो, कुछ भी हो, it has to be, there needs to be a third perspective, there needs to be another perspective. So that completes the team, and this is a very practical point apart from jokes. To complete a team, you need to have everything on the team. Only then an investor will take interest in you, otherwise he won't. So right technology. हर आइडिया के पीछे टेक्नोलॉजी आजकल होना it's almost as important as anything else. So tech driven startups के लिए important है कि क्या आपकी right टेक्नोलॉजी हो सकता है आपकी टेक्नोलॉजी बहुत शानदार है, इंडिया की बेस्ट ना हो, लेकिन टेक्नोलॉजी का रोल होना चाहिए और आपकी टेक्नोलॉजी आपको यूज करना आना चाहिए. So that is very important. You need to be sure that you have the proper technical knowledge is what it means basically. So once you answer all these questions, once you ask yourself these questions and you get answers, get the right answers, you will be sure that you are ready to raise funds, your idea is ready to raise funds, and it can be converted into a proper startup business. Now various stages of an idea. अब एक idea के बहुत stages होते हैं और उसके हिसाब से क्या किस type की funding आपको raise करनी चाहिए is the next point that we will discuss. So pre-prototype, जब आपका idea का prototype भी है, you are just an idea. As we already said, I mean bootstrapping. Bootstrapping is when you invest your own money. अब वो एक college student, when we started we were college students, we did not have our money to invest. हमारे पास एक intern hire करने के पैसे भी नहीं थे, एक Facebook boost करने के पैसे भी नहीं थे. So at that point of time we needed seed funds. So if you see prototype but it is not market ready, at that point of time you need a seed fund. जब आपको एक investor आके उस टाइम आपका product market में नहीं है, उस टाइम आपके पास सिर्फ एक prototype है, your product is ready, but it has not gone into the market and to raise seed funds for the next stage. अब product भी prototype भी बन गया, product भी ready है, market validate हो रहा है, तो it has gone into the market, it needs to scale up. At that point of time you need angel investment. India में angel investment usually ranges from 2 to 6 crores, and that is the kind of money you need at a time when you need to scale in the market, when you need to penetrate the market, when you need to grow in the market and establish yourself. अब market value validate हो गया, अब point आता है grow करने का. This is the time when you need funding of say 30 crores, 50 crores, 100 crores, जो कि आज बहुत बड़े startups के साथ है. That is the time when you hit on venture capital firms. जैसे सेक्वा का नाम सुना होगा, टाइगर ग्लोबल का नाम सुना होगा. They are VC firms who invest in big businesses who have already established themselves in the market, who need to scale up their growth. That is the final stage of funding, and this process should never stop unless you can sustain yourself, obviously. अब funds raise कैसे करने? The most important thing, a very simple process. I keep it very short and crisp. कि funds raise कैसे करने? Create an MVP. तो सबसे पहले you need to create a minimum viable product, a prototype of your product. कि एक आइडिया आ गया, ठीक है, बट एक आइडिया को इन्वेस्टर के पास ले जाने से बेटर है कि आप एक रेडी प्रोडक्ट को इन्वेस्टर के पास लेके जाओ. Do a pilot. First of all, when you have a prototype and you are not ready to go into the market full out, 100, 200, 300, 500 customers पे try करो. And that is the point where you guys have the strength of being in a college, because you have customers around you already. So ask people around you to try out your product, your family, your friends, your network. Ask them to try out your product, have a look at your product and give your feedback. On basis of that feedback, on basis of the first-hand feedback, you create a final prototype which is ready to go into the market. अब आपका प्रोडक्ट मार्केट में जा सकता है. अब मार्केट में जाके उसका क्या ट्रैक्शन है, उसके क्या व्यूअर्स हैं एट लार्ज, वो देखना बहुत जरूरी है. और फिर वापस से build on the traction means once you monitor the traction, now build on that traction कि क्या चाहिए मार्केट के लिए और क्या चेंजेस करने हैं प्रोडक्ट में, क्या फीचर्स ऐड करने हैं, क्या फीचर्स हटाने हैं, कौन से फीचर्स यूजलेस हैं, ये सब चीजें वर्क करनी पड़ती है मार्केट में जाने के बाद. Now you have to try monetizing yourself. ठीक है, आप इन्वेस्टर ढूंढ रहे हो, that's fine, but you need to start monetizing yourself. At least have a monetization plan. एक revenue model हो, आप उस पे work करो, try monetizing and simultaneously keep developing your product. This process should never stop. If you look at this cycle, developing a product comes again and again because you need to keep developing on your product. Your product is never perfect. No product can be perfect for the market. It just needs regular development. Now create a pitch deck. A pitch deck is the key plan that you present to an investor. We come on the pitch deck in the next slide. And then start looking for investors. 100, 200, 500. There are numerous investors out there. You just have to start looking.
Google, LinkedIn, बहुत तरीके, Facebook groups, there are millions of options and hundreds and thousands of investors out there. You just need to start looking for the right one. Investors देखो, keep pitching because you will get a lot of rejections. Rejection is a part of raising funds. Because I mean, when we raised our first round of funding, we were already rejected by almost 25 to 30 investors, which is very less. So I consider myself lucky. He said 25-50 rejections may be got funding. So you have to go to 100, 200, 500 investors and keep trying. Finally, it's very easy if you are a startup entrepreneur. आपको पता ही आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, you just need to pull that forward. आपके मार्केट का साइज क्या है, मार्केट अपॉर्चुनिटी क्या है? 125 बिलियन की इंडियन पॉपुलेशन इज नॉट योर मार्केट. आपका मार्केट बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, आपका मार्केट डिफाइंड होना चाहिए एंड यू शुड नो हु यू आर टारगेटिंग. A sustainable competitive advantage. आप अपने competitors से कैसे अलग हो? What is the advantage that you have over your competitors is very important for an investor to know. Investor ये question जरूर पूछते हैं. Expected revenue and cost of a startup बहुत obvious है. You have to give each and every detail of each rupee that you are spending. You need to have that on your tips. A description of startups management team most important. As we discussed, एक important team होना बहुत जरूरी है. और टीम के बेस पे बहुत इन्वेस्टर्स अपने डिसीजन बेस कर देते हैं लॉट ऑफ टाइम्स. तो एक स्ट्रॉन्ग टीम दिखाना बहुत जरूरी है. इन्वेस्टर्स को उनकी एग्जिट दिखाना बहुत जरूरी है. एग्जिट इन्वेस्टर्स की बहुत तरह से हो सकती है. इट कैन बी अ बाय आउट बाय अ बिगर कंपनी. मिंत्रा अपने इन्वेस्टर्स को ये एग्जिट दिखा सकता था कि वो फ्लिपकार्ट से बाय आउट हो जाएगा, व्हिच इज अ पॉसिबल एग्जिट फॉर एनी इन्वेस्टर. या फिर उनकी कंपनी इतनी बड़ी हो जाएगी दैट दे विल बी सेल्फ सस्टेनेबल. तो दीस आर सम पॉसिबल एग्जिट्स टू द इन्वेस्टर्स जो आपको बताना जरूरी है. Now financials. It will be a very quick word because financials are the whole and soul of a business plan. Financials are the most important part of the business plan. कोई भी investor सबसे पहले शायद सब कुछ ignore करते हैं लेकिन financials कभी ignore नहीं करते. Revenue का forecast देखा हो चाहे 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, लेकिन revenue plan होना बहुत जरूरी है. Detailed plan of at least 3 years और month to month plan of at least 12 months. ये होना बहुत जरूरी है क्योंकि इन्वेस्टर ये देखना चाहता है कि क्या ये आपके लिए सिर्फ एक हॉबी है या क्या आप इसको लेके सीरियस हो, आपका प्लान कितना स्ट्रांग है. उसके लिए यू नीड टू हैव एटलीस्ट 3 इयर्स ऑफ डिटेल्ड प्लान. इन्वेस्टर्स नीड टू हैव कॉन्फिडेंस कि वो आपको पैसा क्यों दे रहे हैं, आप उनके पैसे का क्या करोगे, वेयर आर यू गोइंग टू स्पेंड इट, इज इट गोइंग टू बी अ रेकलेस स्पेंडिंग और इज इट गोइंग टू बी एन ऑर्गेनाइज्ड स्पेंडिंग. तो आपको ये प्रूव करना बहुत जरूरी है कि आप उनका पैसा कहाँ यूज कर रहे हो, क्यों यूज कर रहे हो और उस पैसे को स्पेंड करने से क्या रिटर्न्स मिलेंगे. दैट इज वन एनालिसिस जो वो जरूर मांगते हैं. और एक्सेल स्प्रेडशीट्स यूज करना बहुत जरूरी है. फॉर्मूलाज, टेबल्स, चार्ट्स. जो एक्सेल की जो पावर है दैट यू हैव टू यूज फॉर अ बी प्लान, फॉर अ फाइनेंशियल प्लान, वेरी इंपॉर्टेंटली. वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट दो अलग अलग चीजें हैं, इनको बाइफरकेट करना है. बिजनेस प्लान फाइनेंशियल में मस्ट है. तो आपके ऑफिस फर्नीचर पे कितना खर्च होगा, ऑफिस स्पेस पे कितना खर्च होगा, या एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है तो उसके वेयरहाउस पे कितना खर्च होगा. Then there are variable cost की हायरिंग है, हायरिंग कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, 12 महीने में बढ़ भी सकती है. You have to be very clear on these bifurcations. क्योंकि इन्वेस्टर को ये जानना उसके पर्सपेक्टिव से बहुत जरूरी है कि कितना खर्चा आप फिक्स पे कर रहे हो और कितना वेरिएबल है जिस पे आप कंट्रोल कर सकते हो. So this is a very important analysis. जितना डिटेल में जा सकते हो you have to. अगर आप सैलरीज लिख दोगे तो that does not make any sense to investor. उसको चाहिए कि आप कितने लोग हायर कर रहे हो, आपकी डेवलपर टीम में कितने होंगे, आपकी मार्केटिंग टीम में कितने होंगे, आपके सेल्स पर्सन कितने होंगे, आप फेसबुक के बूस्ट पे कितना खर्च करोगे. ये डिटेल तक आपको अपना फाइनेंशियल प्लान डेवलप करना होगा, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंक्लूड ईच एंड एवरीथिंग राइट फ्रॉम योर ऑफिस सप्लाईज, स्टेशनरी टू लीगल फीस, प्रोफेशनल फीस, इनकॉर्पोरेशन फीस. हर चीज जो आप अपने लेवल पे इंक्लूड कर सकते हो. यू हैव टू इंक्लूड दैट इन योर फाइनेंशियल प्लान टू कीप to convince the investor basically. इन्वेस्टर को चाहिए कि आप कितना ज़्यादा इस आइडिया में घुसे हो और आपने इस पे कितना रिसर्च किया है, और वो दिखाने का एक फाइनेंशियल प्लान सबसे अच्छा तरीका है क्योंकि जितना डिटेल्ड आपका फाइनेंशियल प्लान है उतना ही डिटेल में आपने अपने आइडिया पे वर्क किया होगा. अब क्या करना चाहिए दैट इज नॉट द पॉइंट इज कि क्या नहीं करना. सो द मिस्टेक्स दैट एन एंटरप्रेन्योर मेक, एंड बेसिकली दिस इज फ्रॉम दी एक्सपीरियंसेस, नॉट जस्ट माइंड बट बहुत लोगों के एक्सपीरियंसेस से ये मिस्टेक्स हैं. एंड दीज आर वेरी फ्यू, मतलब ये सिर्फ 8 या 9 पॉइंट्स हैं जो मैं बताऊंगा, बट दीज आर सम पॉइंट्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी प्रैक्टिकल व्हेन यू आर डूइंग अ पिच. एंड दिस विल आफ्टर दिस आई विल ओपन दिस अप फॉर क्वेश्चंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग एलिवेटर पिचेस. एलिवेटर पिच क्या होता है, किसी को पता है एलिवेटर पिच
पिच क्या होता है? 30 सेकंड में आपको पूरा अपना आइडिया उसे समझाना होता है विद इन अ शॉर्ट पीरियड एंड यू हैव टू पिच लाइक जब एलिवेटर में चल रहा है उसी टाइम. Exactly. So not a defined time, 1 minute, 2 minute, like a very short pitch is an elevator pitch. अगर आपको एक elevator pitch का चांस मिलता है, never make it long. अगर एक इन्वेस्टर एक elevator pitch सुनने आया है तो वो इसी माइंडसेट से आया that this will get over in 1 minute. और आपको यही प्रूव करना है कि आप 60 सेकंड में भी अपना आइडिया एक्सप्लेन कर सकते हैं, you can convince him. So you need to have that power. और ये शायद एक सबसे कॉमन मिस्टेक है जो एक एंटरप्रेन्योर करते हैं कि एक एलिवेटर पिच जहां लंबी हो जाती है इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट वहीं लूज हो जाता है. सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड. पीपीटीज और पिच डेक्स कभी भी लंबे नहीं होने चाहिए, कभी भी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं होने चाहिए कि उसमें बहुत ज्यादा पढ़ना पड़े. पीपीटीज एंड पिच डेक्स मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. मतलब व्हेन यू आर रेजिंग फंड्स, अगर आपकी पीपीटी बकवास है, बोरिंग है, तो वो कभी भी आपके आइडिया को सीरियसली नहीं लेंगे. एंड बहुत लोग ये चीज इग्नोर करते हैं, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एक इन्वेस्टर के पास बहुत कम टाइम है. यू हैव टू एग्री टू इट. उसके पास एक दिन में 100 या 200 आइडियाज आ रहे हैं अगर एक बड़ा इन्वेस्टर है तो. यू हैव टू कीप दिस पॉइंट इन माइंड व्हेन यू आर मेकिंग योर पिच डेक. इट शुड बी फैक्चुअली सपोर्टेड. आपके हर चीज के पीछे एक फैक्ट होना चाहिए. कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए दैट आई एम इंडियाज फर्स्ट, मे बी यू आर नॉट. ऐसी चीजों के फैक्ट सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना वो आपकी पिच डेक वहां से नहीं देखेंगे. अगर कोई नॉलेजेबल इन्वेस्टर होगा तो he will be really irritated with things like this which are not factually supported, या जिनकी एग्जीक्यूटिव समरी नहीं है, वेल रिटन एक प्लान नहीं है. इन सब चीजों ये सब चीजें होना बहुत जरूरी है. एग्जिट स्ट्रैटेजी फॉर इन्वेस्टर्स जिसकी हमने अभी बात की, यू ऑलवेज नीड टू गिव देम एन एग्जिट स्ट्रैटेजी कि उनकी एग्जिट अपने आइडिया से आपके स्टार्टअप से कैसे होगी. इसके प्लान्स होना बहुत जरूरी है. या तो आप किसी बड़ी कंपनी से एक्वायर हो जाओगे जिससे इन्वेस्टर्स को एग्जिट मिल जाएगी, या फिर आप सेल्फ सस्टेनेबल हो जाओगे और आप खुद ही उनको बाय आउट कर लोगे, जो कि अभी फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स कर रहे हैं सच मिनी बंस. तो दिस इज द काइंड ऑफ एग्जिट दैट यू हैव टू शो टू योर इन्वेस्टर्स. स्पैमिंग द इन्वेस्टर्स, आप एक इन्वेस्टर को 5 बार फॉलो ले सकते हो, 6 बार ले सकते हो, पर ऐसा नहीं आप उसे हर वीक अपना पिच डेक भेज रहे हो, क्योंकि हो सकता है वो शायद चौथे 5वें मेल तक रिप्लाई कर दे, लेकिन अगर आप उसे 10-20 बार मेल करोगे तो ही लूज इंटरेस्ट, ही विल नॉट हैव अ लुक एट योर आइडिया एट ऑल. Because they get irritated very soon. Investors का ये होता है कि उनकी patience level बहुत कम होता है. It is very tough to convince them, and they get irritated very soon if you spam them. Valuations discuss करना. Now this is a very interesting thing कि startups अपनी valuation बड़ी जल्दी discuss कर लेते हैं. Idea prototype बनता है and they say we are a 100 crore company. कैसे? You cannot value nothing. A value of 0 will always remain a value of 0. So when you are an idea, you need to understand as a startup you cannot be valued at 10 crore or 20 crore or 50 crore. Let investors start the valuation talks. You can negotiate, of course, at a point of time. You can start negotiating your thing, but you have to wait till they start the valuation talks. अगर आपने PPT में ही या आपने first mail में ही उनको ये बोल दो कि मेरा आइडिया का valuation 10 crores है, तो they will not have any interest in looking at it any further. उनको नहीं चाहिए कि आप उनको अपने valuation बताओ. Let them talk the numbers. And failure to listen. You have to listen to investors and mentors. Investors are very harsh. They are very grilling. बहुत cross question करते हैं, बहुत grill करते हैं. They test your patience a lot. लेकिन you have to give them time. You have to listen to them. हो सकता है एक इन्वेस्टर मना कर दे, लेकिन वो जो बातें बोलता है वो आप अगले पिच में यूज करके you can work on them. So this is very important. You need to keep this in mind. And this is basically true for everything. चाहे वो मेंटर हो, चाहे वो एक सेशन हो, चाहे वो एक इन्वेस्टर हो, you have to have the power of listening to anybody when you are a startup. Because even now, after working on our idea in last 1.5 years, so मुझे ऐसा लगता है मेरे आइडिया के बारे में मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मैंने इसमें अंदर तक काम किया है. लेकिन आज भी अगर हमें कोई बताता है तो हमको सुनना पड़ता है, because that is what startups have to be prepared for. Thank you, and I will now